Everyone, welcome to my YouTube channel NCRT Maths Hub. Today in this video we will do worksheet number 39 for class 9 subject mathematics. So let's begin. Today our topic is surface area and volume. So in this video we are going to learn the basic introduction of surface area and volume of three-dimensional shape that belongs to the chapter 13 class 9 NCRT mathematics. So let's begin. Required previous knowledge. So understanding of two-dimensional figures, that is the figures that we have learned about in the previous classes, that is rectangle, square, triangle, circles, etc. So children, you know about the two-dimensional figures having two measurements, or you can say two dimensions like length and breadth. For example, rectangle, square, triangle, circle, etc. So a solid object that has three measurements like length, breadth, height or depth, or you can say thickness, are called as three-dimensional figures. So two-dimensional figures can be identified as the face of थ्री-डायमेंशनल फिगर्स. सो देखिए थ्री-डायमेंशनल फिगर्स में जो फेसेस होंगे वो आपके टू-डायमेंशनल शेप में होंगे. सो सम फिगर्स हैव टू और मोर देन टू identical congruent faces. So let's learn about the some three-dimensional figures. So let's begin. The first one is cuboid. So carefully observe the shape of each face of empty toothpaste box. All the six faces are rectangular and opposite faces are identical, and this figure is known as cuboid. So देखिए जो टूथपेस्ट का बॉक्स है वो क्या होगा, क्यूबॉइड शेप में है. उसके अपोजिट फेसेस क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे. जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रंट बैक. सिमिलरली आप देख सकते हैं लेफ्ट और राइट, एंड सिमिलरली आप देख सकते हैं टॉप और बॉटम भी आपके क्या होंगे, रेक्टेंगुलर शेप में होंगे. सो ऑल फेसेस आर ऑफ रेक्टेंगुलर शेप एंड अपोजिट फेसेस आर आइडेंटिकल, देन द शेप इज नोन एज क्यूबॉइड. सो नाउ यू कैन टेक अनदर एग्जांपल ऑफ क्यूबॉइड फ्रॉम योर डेली लाइफ, दैट इज मैच बॉक्स, ए ब्रिक, योर बुक, your kitchen, your room, your hall and many more examples. Water tank on the roof of your home. So आप इस प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं डेली लाइफ में जो कि क्यूबॉइडल शेप के होते हैं. सो नाउ प्रोसीड फॉर नेक्स्ट वन, दैट इज इफ द ऑल फेसेस ऑफ दिस बॉक्स आर स्क्वायर. देखिए अगर ये सारे जो इस बॉक्स के जो सरफेसेस हैं, सारे फेसेस हैं, वो सारे क्या स्क्वायर शेप में हो जाएं, देन हम क्या कहेंगे, और सारे आइडेंटिकल हो जाएं, देन दिस फिगर इज नोन एज क्यूब. देखिए अगर हम बात कर रहे थे क्यूबॉइडल शेप में, सो इस बॉक्सेस के अगर सारे जो आपके फेसेस हैं वो स्क्वायर शेप में हो जाएं तो हम इसको बोलेंगे क्यूब, जैसा कि आप देख सकते हैं क्यूब. सो क्यूब क्या है, क्यूब इज़ मेड अप ऑफ सिक्स स्क्वायर्स. क्यूब किससे मिला है, सिक्स स्क्वायर से मिलकर बना है. सो क्यूब में क्या है, ऑल फेसेस आर इक्वल, लाइक, आइडेंटिकल, यू कैन सी. सो यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ लूडो डाइस, सो दैट इज ऑफ क्यूबिकल शेप, एंड यू कैन टेक मैनी मोर एग्जाम्पल फ्रॉम योर डेली लाइफ. सो नाउ प्रोसीड for the third one, that is carefully observe the round powder box. It has one curved surface and two circular surfaces which are identical. You can see here. So this figure is known as cylinder. इसको क्या बोलेंगे, हम सिलेंडर बोलेंगे. जिसमें हमारे पास क्या होगा, एक curved surface होगा, one is curved surface and other are two circular faces that are identical and on the base and top. So देखिए आप देख सकते हैं टॉप और बेस जो आपका होगा आइडेंटिकल होगा, and that is in circular shape and another one is curved surface. सो ये आपका क्या कहलाता है, सिलेंडर कहलाएगा. सो सम सॉलिड फिगर्स डू नॉट हैव एन आइडेंटिकल फेस. लेट्स लर्न अबाउट सच फिगर्स. सो देखिए कुछ फेसेस, जो कुछ आपकी शेप्स हैं जिनमें आइडेंटिकल फेसेस नहीं होते हैं, सब उनके बारे में पढ़ते हैं. सो लेट्स बिगिन. सो आप देख सकते हैं इट हैज़ वन कर्व्ड फेस एंड वन फ्लैट फेस इफ फेस इज क्लोज्ड. दिस फिगर इज नोन एज कोन. इट लुक्स लाइक ए बर्थडे कैप. जैसा कि आप देख सकते हैं आपका बर्थडे कैप हो सकता है. रोड पर बैरिकेड्स होते हैं जो कि डाइवर्जन के लिए यूज़ किए जाते हैं. एंड यू कैन से सॉफ्टी कॉर्न जो आप खाते हैं, आपका फेवरेट है सॉफ्टी कॉर्न. सो इस टाइप के आप बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं डेली लाइफ में जो कि आपके कॉनिकल शेप में होते हैं. कॉर्न ट्री, मे बी कॉर्न ट्री, सो एंड कॉर्न. सो मैनी मोर एग्जाम्पल्स आर देयर इन योर डेली लाइफ दैट बिलोंग्स टू शेप कॉर्न. So it has only one curved surface. देखिए नेक्स्ट वन हम पढ़ रहे हैं. So it has only one curved surface and this figure is known as sphere. It looks like a ball. Spherical जो shape है वो क्या है, बॉल जैसे दिखती है. So this is known as sphere. So next one is if a sphere is divided into two equal parts, then each part is half is called hemisphere. So hemi or semi means half. So sphere, hemisphere means sphere का half हो जाएगा. So that has a one curved surface and one flat base. सो देखिए क्या है, ये हमारा क्या है, हेमिस्फीयर है. सो इसका स्फीयर का हम हाफ कर दें तो हमें क्या मिलेगा, हेमिस्फीयर मिल जाता है. सो इफ स्फीयर इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, देन ईच पार्ट, हाफ पार्ट इज नोन एज हेमिस्फीयर. इट हैज़ वन कर्व्ड फेस एंड फ्लैट सरफेस. सो नाउ प्रोसीड
नेक्स्ट वन, द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज सम ऑफ एरिया ऑफ इट्स ऑल फेसेस। तो देखिए सरफेस एरिया क्या होता है, सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल फेसेस इज नॉन एज सरफेस एरिया। वी यूज द स्क्वायर यूनिट्स टू रिप्रेजेंट द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड फिगर। सो देखिए जितने भी आपके सरफेस हैं सॉलिड के, उन सभी फेसेस का सरफेस एरिया होगा, उनका ऐड कर दीजिए तो हमें क्या मिलेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दैट शेप। अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इज नॉन एज इट्स वॉल्यूम। सो देखिए कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो 30 जो आपका ऑब्जेक्ट, दैट इज नॉन एज 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। सो उसको हम क्या बोलेंगे, उसका वॉल्यूम बोलेंगे। वी कैन यूज क्यूबिक यूनिट टू रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर। सो वी कैन say that the volume of solid is measured by counting the number of units, or you can say number of cubes it contains. So कितना क्यूब कंटेन करता है उसको हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम बोलेंगे किसी भी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का। सो नाउ जैसा कि आप देख सकते हैं 3 डायमेंशनल शेप का, सो आप देख सकते हैं वी हैव अ टेबल इन विच वी आर गिविंग सम ऑब्जेक्ट, गिवन सम ऑब्जेक्ट एंड वी आर टू मैच देम। यू कैन से हाफ लेमन। सो देखिए आप हाफ लेमन का बताना है कि शेप का होगा। सो हाफ लेमन विल बी ऑफ spherical shape, you can say option D. And now shoe box, that is of cuboidal shape, so you can, shoe box is of cuboidal shape. Now football, that is of sphere, football क्या हमारा spherical shape में है, so football is of spherical shape, so it is here. So half lemon is hemisphere, I am repeating, half lemon is hemisphere while football is spherical shape. And dice, that is of cube, dice क्या हमारी cubical shape में है। And tube light, you can say tube light is of cylindrical shape, so tube light आपकी cylindrical shape में है। And ice cream, that is of conical shape. So keep in mind, this is all about basic introduction of surface area and volume, that it belongs to chapter 13 class 12 NCERT mathematics. So if you learn from this video, then please do subscribe my channel and share this video as much as you can. Thanks for watching.